A person has 8 friends. The number of ways in which he may invite one or more of them to a dinner is. Five C question number 8. एक person है जिसके पास 8 friends है. In how many ways he can invite one or more of them? So it can be 8C1, he may invite one friend, or he may invite any two, or any 3, or any 4, or any 5, or any 6, or any 7, or any 8. C1 is 8. C2. $28. 8C3. 8 into 7 into 6 divided by 6. So that is 56. 8C4. That is 70. 8C5 is 56. 8C6 is 28. 8C7 is 8. And 8C8 is 1. And then we will add them. We'll get the answer. There is one more method using the property. The property is if out of n objects, we have to select one or more objects, then it can be done in 2 raised to n minus 1, 2 raised to 8 minus 1. It's 256 minus 1, answer is 255. You can check out, add this and see this. If they both are same, it is the same method. लेकिन ये फॉर्मूला है. ओके, उन्होंने क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स में से एक या एक से ज्यादा फ्रेंड्स को बुलाना है. वो एक फ्रेंड को बुलाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इट इज नथिंग बट 2 raised to 8 minus 1. Your answer is 255. B. 6 sum. The number of ways in which a person can choose one or more of 4 electrical appliances. TV, refrigerator, washing machine, and a cooler. There are 4 electrical appliances. We want to select one or more. So it can be 4C1 or 4C2 or 4C3 or 4C4. 4C1 is 4, 4C2 is 6, 4C3 is again 4 and this is 1, 10, 14, 15. Your answer is 15. One more method by this. 2 raised to 4 minus 1, 16 minus 1. Your answer is 15. See, 15 is the answer. Question number 7. If NC10 is NC14, what is 25CN? NC10 is NC14. We know NCR is NCN minus R. So NC10 can be written as NCN minus 10. NCN minus 10 is NC14. N minus 10 is 14. N is equals to 24. So they want to find out 25CN, that is 25C24. 25C24
is nothing but 25C. 25 minus 24. That is 25C1. Your answer is 25. B is the answer. Question number 8. Out of 7 gents and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. The number of committees such that each committee includes at least 1 lady. This is question number 8. 7 gents and 4 ladies. We have to form a committee of 5 such that at least 1 lady is included. So 1 lady, 4 gents. 2 ladies, 3 gents. 3 ladies, 2 gents. 4 ladies, 1 gent. We cannot have more than 4 ladies because there are only 4 ladies. So 7C4 into 4C1. 7C3 into 4C2. 7C2 into 4C3. 7C1 into 4C4. Either or है तो इसको ऐड करना पड़ेगा and you will get the answer. Question number 9. 28C2R as to 24C2R minus 4 is 225 upon 11. Then the value of R is. Here we can put the value of R and calculate. That is also bit tricky क्योंकि बहुत बड़े-बड़े numbers है. या फिर हम लोग उसे इस तरह से भी solve कर सकते हैं. 28C2R upon 24C2R minus 4 is 225 upon 11. So it is 11. 28C2R is equals to 225 24C2R minus 4. 11. 28 factorial upon 2R factorial. 28 minus 2R factorial is equals to 225. 24 factorial upon 2R minus 4 factorial. 28 minus 2R plus 4 factorial. 11 into 28 factorial upon 2R, 2R minus 1, 2R minus 2, 2R minus 3, 2R minus 4 factorial into 28 minus 2R factorial is equals to, this is 225, 24 factorial upon 2R minus 4 factorial. This is 24. So it is 28 minus 2R factorial. This and this will get cancelled. This and this will get cancelled. 11 into 28 into 27 into 26 into 25 into 24 factorial upon 2R, 2R minus 1, 2R minus 2, 2R minus 3 is equals to 225 into 24 factorial upon 24 factorial. 24 factorial will get cancelled. We'll cross multiply. It is 11 into 28 into 27 into 26 into 25. Whole thing upon 225 is equals to 2R. 2R minus 1. 2R minus 2, 2R minus 3. So this is 11 into 28 into 27 into 26 into 25 divided by 225. 24024 is equals to 2R.
2r minus 1, 2r minus 2, 2r minus 3. Now let us express 24,024 into 4 consecutive numbers, product of 4 consecutive numbers. See, if we try to find out, then 14 into 13 into 12 into 11, product of these 4 consecutive numbers is the given number. So 2r is equals to 14, r is 7. So if r is 7, then we can find out, then this is true. A big sum, but we'll have to do it. Otherwise, you can also put the options and try. ते पण तितकंच मोठं होणार आहे, जितकं याचं solution मोठं आहे. This was question number 9. Next, question 10. The number of diagonals in a decagon is. A regular decagon will have 10 sides. 10 sides, that is 10 vertex. To form a diagonal, we need 2 vertex at a time. So in 10C2, that is 10 into 9 upon 1 into 2. 45. Out of these 45, 10 are sides. So remaining 35 are the diagonals. They have also given you the hint here. You can follow this formula also, or we can follow the same formula that we have used. There are 12 points in a plane, of which 5 are collinear. The number of triangles. 12 points, of which 5 are collinear. We want to find out number of triangles. To form a triangle, we need 3 points. So out of 12, we'll select 3 in 12C3. 12 into 11 into 10 upon 1 into 2 into 3. Is total 220. If I select triangle out of these 5 points, that will be 5C3. That is 5 into 4 into 3 upon 1 into 2 into 3. Is 10. I'll minus out of this total triangles, 220. These 10 are not triangle because they are formed from collinear points, and collinear points don't form a triangle. So total triangle will be 210. C. Twelfth, the number of straight lines obtained by joining 16 points on a plane. No 3 of them are on same line. So 16 points, you have to form a straight line. 12th. Out of 16 points, we have to form a straight line. No 3 lines are collinear. That is, no 3 points are lying on the same line. देखो 2 points हमेशा ही collinear होते हैं, क्योंकि 2 point हमेशा ही एक straight line पे lie कर सकते हैं. Collinearity 3 points के लिए ही check की जाती है. तो 16 में से कोई भी 3 points collinear नहीं है. हमको कितने straight lines मिलेंगे? 16C2. That is 16 into 15 upon 1 into 2. 120.
A. 13th sum. At an election, there are 5 candidates and 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than number to be elected. 5 कैंडिडेट है, 3 को इलेक्ट करना है और एक वोटर जो है वो कितने भी वोट्स दे सकते हैं, लेकिन जितने को इलेक्ट करना है उससे ज्यादा नहीं, मतलब 3 से ज्यादा वोट नहीं दे सकता एक कैंडिडेट। तो एक कैंडिडेट 1 वोट दे सकता है, 2 वोट्स दे सकता है या फिर 3 दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 5C1 is 5, 5C2 is 10, 10, your answer is 25. C. 14th is very interesting. Every 2 persons shakes hand with each other in a party and the total number of handshakes is 36. The number of guests in the party. एक शेक हैंड करने को 2 हाथ लगते हैं और दोनों राइट हैंड होते। If there are n guests in party, n right hands, आप ये n राइट हैंड में से 2 राइट हैंड कैसे सिलेक्ट करेंगे? NC2 में NC2 is 66, so n factorial 2 factorial n minus 2 factorial is 66. N factorial n minus 2 factorial is 66 into 2. N minus 1, n minus 2 factorial upon n minus 2 factorial is 132. N minus 1 is 132. N minus 1 is 12 into 11, because these are 2 consecutive numbers. 132 can also be expressed as 2 consecutive numbers. So n is 12. Or otherwise, at this moment only you can try the options for n and find out the answer. म्हणजे ऑप्शन्स मध्ये बघा, पहिला ऑप्शन आहे 11, 11C2, 66 येतं का बघा, मग 12 टाकून बघायचं। मैम आपका आवाज Sum number 15, number of parallelogram that can be formed from the set of 4 parallel lines intersecting the set of 3 parallel lines. Set of 4 parallel lines intersecting set of 3 parallel lines. अगर पैरेललोग्राम चाहिए तो ये 4 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट करेंगे 4C2 में, और या फिर ये 3 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट करेंगे 3C2 में। This is 6 into 3, that is 18. ये 4 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट किया तो 2 साइड्स बन जाती है, ये 3 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट किया तो 2 साइड्स बन जाती है, वैसे 18 पैरेललोग्राम वहां पे फॉर्म हो जाएंगे। Next is 16. The number of ways in which 12 students can be equally divided into 3 groups is 12 students. Now this is a combination of n objects divided equally into some groups. It is, अभी अगर 3 ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और हर ग्रुप में अगर p एलिमेंट होगा क्योंकि इक्वली है तो p फैक्टोरियल ब्रैकेट क्यूब। उस हिसाब से ये 12 स्टूडेंट्स है, इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है वो भी इक्वली, तो हर ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स आएंगे, तो 4 फैक्टोरियल क्यूब into 3 फैक्टोरियल। After solving this, you will get 5775. Solve this and see. कि जब भी हम लोग थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं
तो वी डू दिस आर फैक्टोरियल, 3 ग्रुप से इसलिए 3 फैक्टोरियल। जब भी हम लोग इसे लोगों में डिवाइड करते हैं तो सिर्फ ये 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, इतना ही रहेगा बस। वो हम लोग करके देखते हैं चाहिए तो। सी 8 फैक्टोरियल इज 40,320। हमको 12 फैक्टोरियल चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 9, 10, 11, 12। अब 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट क्यूब मतलब डिवाइडेड बाय 24, अगेन डिवाइड बाय 24, अगेन डिवाइड बाय 24। देन 3 ग्रुप्स में है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। योर आंसर इज 5775। Now 17 sum. The number of ways in which 15 mangoes can be equally divided among 3 students. Now this is not division in groups. This is division among people. Division among people equally such that each one get P units is given like this. 15 mangoes can be divided 15 factorial. Among 3 people, 3 students. So each one will get 5 mangoes. 5 factorial bracket cube. This is your answer. B is your answer. 18th. 8 points are marked on the circumference of a circle. The number of chords obtained by joining these in pairs is. सर्कल पे कितने पॉइंट्स है? 8। कॉर्ड्स कितने बनेंगे? इन 8 में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करोगे तो कॉर्ड बन जाएगा। तो 8C2, 8 into 7 upon 1 into 2, 28 chords. क्योंकि सर्कल के सरकमफरेंस पे जितने भी पॉइंट्स है वो 2-2 पॉइंट्स को आप अगर ज्वाइन करोगे तो ही तो आपको कॉर्ड मिलेगा। अभी सपोज इधर 8 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से किसी भी 2 को आप ज्वाइन करते हो तो आपको कॉर्ड मिलता है। ऐसे कितने कॉर्ड्स हो जाएंगे? 28 कॉर्ड्स। एक डायमीटर भी होगा क्योंकि डायमीटर भी तो कॉर्ड ही है, हाईएस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और longest chord of a circle is diameter. 19th. A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mrs. X refuses to serve in a committee in which Y is a member. The number of such committees. There are 8 ladies and 7 gents. We have to form a committee of 3 ladies and 4 gents. उसमें भी मिसेस एक्स बोल रही है कि अगर वाई कमिटी में होगा तो वो नहीं होगी। एक तो मिसेस एक्स होगी तो 1C 1 वे में होगी, तो रिमेनिंग 7 में से आप रिमेनिंग 2 को सिलेक्ट करोगे। तो मिसेस एक्स कमिटी में है तो वाई तो है ही नहीं, तो 6C4 होगा। या फिर वाई कमिटी में है तो रिमेनिंग 6 में से रिमेनिंग 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो एक्स नहीं होगी तो 7C3 होगा। Or otherwise, both are not there in committee, 7C3 and 6C4. This is one way of doing. Another way, उन्होंने बोला है अगर x बोल रही है कि अगर y कमिटी में होगा तो वो नहीं होगी, तो x हुई तो y नहीं होगा, y कमिटी में हुआ तो x नहीं होगी, या दोनों कमिटी में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे लेट बोथ ऑफ देम बी इन अ कमिटी। तो x कमिटी में है, y कमिटी में है, तो एक लेडी है एक जेंट्स है। अब हमको 2 लेडीज चाहिए 7C2 में और 3 जेंट्स चाहिए 6C3 में। 7C2 is
21 into 20, that is 420. This is the case that both of them are in committee. 8C3 into 7C4. Total number of ways of forming a committee is 1960. Out of them, in 420 ways, both of them are in committee. So, in 1540 ways, at least one of them is not in the committee. हम लोगों ने ये टाइप पहले भी किया है. टोटल वेज में से ऑलवेज इन द कमिटी माइनस करो, आपको एक है तो दूसरा नहीं है, ये मिल जाएगा. You have the answer 1540. Sum number 20. If 500C92 is equals to 499C92 plus NC91, then find out N. Sum number 19. Sorry, ये वाला 19 था. तो अब ये सम नंबर हो गया 20. 500C92 is 499C92 plus NC91. 500C92 is equals to 499C92 plus NC91. I can use the Pascal law here. 499C92 plus NC91. You have to find N. This is NCR plus NCR minus 1. So N is 499. And 499C92 plus 499C91. As per Pascal's law, it will be NCR. So 500C92. So N is 499. D. Let us take 21. Supreme Court has given 6-3 decision upholding the lower court. The number of ways in which it can give a majority decision reversing the lower court. Supreme Court ने 6-3 decision upholding the lower court बोला है. Total 9 cases का decision दे दिया है. Okay, 6-3 का मतलब ये है कि total cases कितने हैं? 9. You have to find the number of ways in which it can give a majority decision reversing the lower court. Total 9 decision है. अब ये upholding, ये reversing. Majority decision should be reversing the lower court. तो 9 के 9 वो दे सकते हैं और 0 upholding, या 8 दे सकते हैं और 1 upholding. 7 decision reversing दे सकते हैं, 2 upholding. 6 डिसीजन रिवर्सिंग दे सकते हैं, 3 अपहोल्डिंग में. 5 डिसीजन रिवर्सिंग दे सकते हैं, 4 अपहोल्डिंग में. अब इससे आगे नहीं, क्योंकि अगर इधर 4 हो जाएगा तो ये 5 अपहोल्डिंग हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए. बिकॉज वी वांट द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन गिव मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट. It can give all 9 decision reversing lower court or only 8
and 1 upholding, 7 and 2, 6 and 3, 5 and 4. So it's 9C9 or 9C8 or 9C7 or 9C6 or 9C5. Find out. Yes, what is the answer for 21? The answer for 21 is 256. Now next, sum number 22. 5 bulbs of which 3 are to be supplied into bulb. Bulb points in a dark room. The number of trials the room shall be lighted is. 5 बल्ब है, उसमें से 3 डिफेक्टिव है और 2 बल्ब पॉइंट है. कितने वेज में वो रूम लाइटेड होगी? 5 में से 3 डिफेक्टिव है, 2 नॉन डिफेक्टिव है. रूम लाइटेड होगी जब कम से कम 2 में से 1 बल्ब तो नॉन डिफेक्टिव हो. तो एक नॉन डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव है, या दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव. तो ये हो जाएगा 3C1 into 2C1, that is 3 into 2, that is 6. या फिर 2C2 and 3C0, that is 1. So total 7 ways. This is one way of solving. Next, I will say let the room be dark. Alternate way of solving this. अगर रूम डार्क चाहिए तो दोनों के दोनों बल्ब डिफेक्टिव होने चाहिए. That will be 3C2. That is in 3 ways. 5 बल्ब में से आपको 2 सिलेक्ट करने, that is 5C2 total. That is 10 ways. 10 minus 3 total ways minus dark room. Answer is the room is lighted. 5 में से 2 बल्ब सिलेक्ट करके बल्ब पॉइंट पे लगा देने, तो वो रूम जो है वो लाइटेड होनी चाहिए. कितने वेज में वो लाइटेड होगी? जब दोनों में से एक बल्ब पॉइंट तो चले, मतलब एक चले और एक ना चले, या फिर दोनों को दोनों चले. एक बल्ब से लाइट आए, एक से ना आए, या दोनों से लाइट आ जाए. तो एक से आए, एक से ना आए, 6 वेज. दोनों से आए 1 वे. टोटल वेज 7. अल्टरनेटली 5 में से 2 बल्ब कैसे सिलेक्ट करेंगे? 5C2 10 वेज में. 3 अगर मैंने बोला कि बल्ब पूरा रूम डार्क होना चाहिए, तो वो डिफेक्टिव बल्ब अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ही पूरा रूम डार्क होगा. 3C2 that is in 3 ways.
टोटल में से डार्क माइनस कर दूं तो मुझे रूम लाइटेड है इसके चांस मिल जाएंगे। अच्छा, मिसलेनियस एग्जाम्पल 5D। 5D ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है। हम लोगों ने जो सीखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, उसी का एप्लीकेशन है ये। The letter of the word Calcutta and America are arranged in all possible ways. The ratio of the number of their arrangements is. Pi D का first. कैलकटा तो कैसे अरेंज करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। This is 5040. Next is America. Seven factorial upon 2 factorial. So it is 5040 divided by 2, that is 2520. We want ratio of arrangement of Calcutta as to America. So 5040 as to 2520, that is 2 as to 1. Second, the ways of selecting 4 letters from the word examination is, this is a very unique sum. Examination में कितने letters है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से E X M T O ये सिंगल सिंगल है। 1 2 3 4 5 ये सिंगल है। ए 2 बार आया है, I 2 बार आया है, N 2 बार आया है। ये 5 ये 6, 11 लेटर्स हो गए। अब हम लोगों को 4 ही लेटर सिलेक्ट करने हैं इसमें से, तो मैं चारों के चारों डिस्टिंक्ट लेटर सिलेक्ट कर सकती हूँ। 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स आर सिलेक्टेड। तो वो E X M T O A I N 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 सिलेक्ट करेंगे HC4 में। 8 into 7 into 6 into 5, divided by 24. So this is 70. या फिर 2 अलाइक, 2 आर अलाइक and 2 are distinct. 2 अलाइक है मतलब मैं ये तीनों में से किसी भी दो को एक को सिलेक्ट कर लूं in 3C one way, और बाकी के जो 2 है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इनमें से जो एक सिलेक्टेड है वो छोड़ के बाकी इसमें से मैं एक एक ही ले लूंगी, प्लस दिस 5। तो ये हो गए 7। 7 में से अब मुझे 2 ही सिलेक्ट करने हैं इन 21 ways. So 21 plus 3, सॉरी 21 into 3 63 ways में ये सिलेक्शन होगा। 2 अलाइक है तो ये जो अलाइक है इसमें ये 3 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगी तो 2 अलाइक मिल जाएगा मुझे। फिर ये 5 और इन दोनों में से सपोज मैंने ए सिलेक्ट कर लिया तो ये ए अलाइक हो गया। फिर एक I एक N और ये 5, ऐसे 7 में से मैं रिमेनिंग 2 को सिलेक्ट कर लूं तो दिस टोटल नंबर इज 63। Then the last one,
2 are alike and 2 are alike. 3 see 2 ways. So this is 3. क्योंकि 2 अलाइक है एक टाइप के, 2 अलाइक है एक टाइप के, तीनों में से 2 को सिलेक्ट करना है. 3C2, तो this is 3. So it is 70 plus 63 plus 3. Find out your answer. 136. Yes. ये सेम आंसर आता है अगर आप मैथमेटिक्स में से सिलेक्ट करो. बहुत ही अलग किस्म का सम है ये. Four objects from n objects. See, you can select 4 distinct objects. You can select 2 alike and 2 distinct, and you can select 2 alike and other 2 are also alike. Then the next one, the number of different words that can be formed from 12 consonant and 5 vowels by taking 4 consonant and 3 vowels in each word. Total consonant कितने हैं? थर्ड सम के बारे में बात कर रहे हैं हम. 12 कंसोनेंट 5 वॉवल है, उसमें से हमको सिलेक्ट किसको करना है? 4 कंसोनेंट 3 वॉवल को. 12C4 into 5C3. कोई भी 4 कंसोनेंट और 3 वॉवल सिलेक्ट हो गए. अब इन 7 को अरेंज भी करना है इन 7 फैक्टोरियल. We have done one such sum yesterday also. So you can solve this.